समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे टेबल में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ आइटम्स के नाम है और उसको मेजर करने के यूनिट्स है। Suppose we go in the market and we are asking for the mangoes or potatoes, grains, sugar and gold. Are we all are using the same unit for this? Absolutely not. We are using different units for this. Like if we want mango, then we are asking it in the dozens. If we are purchasing potato, grains or sugar, we are asking it in the kgs. And if we want to purchase gold, then how we are asking it for in grams. Like that only. If now we know substance or matter is made up of atoms and particles. If we want to measure how many atoms or particles are present in substance or matter, then we are using the unit mole for that. This mole is nothing but we are measuring number of atoms or particles present in any substance or matter. आइए समझते हैं इस टेबल को। इसमें कुछ मैंने सब्सटेंसेस दिए हैं, उसका वेट और उसमें कितने एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर हम 1 kg वेट ऑफ पोटैटो लेते हैं तो इसमें हमें सपोज 10 पोटैटोज आ जाते हैं। 1 kg ग्रेप्स लेंगे तो 2000 ग्रेप्स। अगर एक एक ग्रेप्स को हम मेजर करेंगे और उसको देखेंगे तो हमें सपोज 2000 एटम्स और पार्टिकल्स मिलेंगे ग्रेप्स के। और अगर हम 1 kg शुगर लेंगे और उसको मेजर करेंगे उसमें कितने एटम्स है कितने पार्टिकल्स है, सपोज हमें मिलेंगे 3 लाख पार्टिकल्स और एटम्स। 1 kg शुगर 3 लाख पार्टिकल से बना है सपोज करो। और 1 kg ग्रेप्स में कितने पार्टिकल्स और एटम्स मिले, 2000 एटम्स मिले। 1 kg पोटैटो अगर मेजर करेंगे तो उसमें कितने एटम्स और पार्टिकल्स मिले, 10 एटम्स और पार्टिकल्स। इसका मतलब है 1 kg पोटैटो, 1 kg शुगर, 1 kg ग्रेप्स अगर लेंगे तो इसमें जो भी हमें एटम्स और पार्टिकल्स मिलेंगे उसका नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, वो सेम नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पार्टिकल्स और एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा 1 kg पोटैटो लिए, 1 kg शुगर एंड 1 kg ग्रेप्स लिए थे, ऐसे ही हम लोग अभी मेजर करेंगे मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिया है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ शुगर, 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी एंड 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब 1 मोल है, 1 मोल है। लाइक इन द लास्ट स्लाइड वी आर टेकिंग 1 kg ऑफ all substances, here 1 mole of all substances we took। अगर हम फिजिकली भी देखेंगे तो इसके जो भी कंटेंट है, जो भी पार्टिकल्स है वो दिखने में डिफरेंट है और उसका वेट भी अलग लग रहा है, बट उसको हम मेजर इसको बोलेंगे हम ये सब सब्सटेंसेस कितने हैं तो 1 मोल है। और 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है 1 मोल में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, अगर हम मेजर करेंगे तो ये नंबर है 6.022 into 10⁻23 और इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। ये सब सब्सटेंसेस 1 मोल है, बट इसके जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके ऑब्वियसली इसका नंबर सेम नहीं रहेगा अगर हम उसको काउंट करेंगे तो। Average atomic mass. The atomic mass of an element which exists as a mixture of two or more isotopes is the average atomic masses of its isotopes. This is called average atomic mass. आइए समझते हैं एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास मतलब क्या। एवरेज मतलब we are taking the sum of all elements and dividing by the how many they are in numbers. Suppose we take the example of here carbon and we want to take the average atomic mass of carbon. Then what we have to do? We have to take its mass number sum. What is the mass number here? 12, 13 and 14. In the isotopes we know that mass number is different and atomic number is same. Here we have to take in the consideration mass number. Then what we will do to take the average? We will divide it by the 3 and we will get the average atomic mass. In case of nitrogen, if we want to take average atomic mass, what we will do? We will do the sum of its masses 14 plus 15 by 2.
then its round of figure we will get 14. Like that in the oxygen also, if we take its mass number addition 16 plus 17 plus 18 by 3, it is average atomic mass of oxygen and we will get the round of figure 16. This is average atomic mass. Average means we have to add all masses of that isotope of particular element and we have to divide it by the number how many isotopes are there. 2 are there, then we will divide the mass number with the 2. If 3 are there, then we will divide it with the 3. यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दिए हैं, वन है एवोगाड्रोस कांस्टेंट एंड वन है 1 एटॉमिक यूनिट, मतलब कितना होता है. ये दो नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द क्वेश्चन that which one is the following shows the Avogadro's number. Then you have to write there 6.022 into 10 raised to 23 and one atomic unit mass कितना होता है 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. अगर इसी को ग्राम्स में पूछेंगे तो आप लिखोगे 1.66 into 10 raised to minus 24. These two values are very important for the calculation also and directly question can be asked on that. और आइए समझते हैं अभी मोलार मास क्या है. इसको ही मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं और मोलार मास भी बोल सकते हैं. अगर हम इसको मोलार मास बोल रहे हैं तो इसको हम मेजर करेंगे ग्राम्स में. अगर मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं तो 1 एटॉमिक यूनिट में और सिंपल यू में हम इसको डिनोट करेंगे. ऑल नोटेशंस ऑफ 1 एटॉमिक यूनिट मास आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. इसी को दूसरा नाम है यूनिफाइड मास और उसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल यू से और इसको डिनोट कर सकते हैं हम कैपिटल डी एंड ए से. ये सब नोटेशन सबको याद रखने हैं, उसी को हम यूज करेंगे. अब आइए समझते हैं कैसे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास. एज वी नो एनी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ more than one atom. Here we will take the example of carbon dioxide. If we want to calculate the molecular mass of carbon dioxide, we have to take in consideration how many atoms of that molecules are used. Here one carbon atom and 2 oxygen atoms are used. Then we will take their particular atomic masses and we will multiply it with the number, how many numbers of oxygen atoms, how many number of carbon atoms are used. Like that, here one carbon atom is used, then we will write 1 into average atomic mass of carbon. Average atomic mass we have learned already. आइसोटोप सम लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 into 12 U करेंगे. 12 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. अब लेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ मेनी एटम्स आर यूज्ड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई इट विद द 2 एंड in the last we will get the answer 44 U. It means molecular mass of carbon dioxide is 44 U. यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे कि मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड एटॉमिक मास. जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब टर्म्स अलग अलग हैं बट इनका मीनिंग बहुत सेम है, इक्वल ही है. बस इसका डिफरेंस एक ही है कि इनको मेजर करने के यूनिट्स डिफरेंट है. Molar mass is the same only. Molecular mass, formula mass, atomic mass, these all are same terms. We can use it molar mass or either instead of molar we can say it atomic mass or formula mass also. And its units also same. As you can see atomic mass unit. We are denoting it by the small letter U. आपको ये समझना है मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड एटॉमिक मास ये तीनों टर्म्स एक ही है और इनको मेजर करने का यूनिट भी सेम है. उसको डिनोट करेंगे हम बाय लेटर स्मॉल यू. मॉलिकुलर मास अलग है नहीं है, ये भी मॉलिकुलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास ये सब सेम वैल्यूज रहते हैं. बस इसको मेजर करने का यूनिट रहेगा ग्राम्स पर मोल. आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप इसको टेबल के थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. उसका हम एटॉमिक मास अगर देखेंगे
तो वो है 1, 12 एंड 16 U। और इसी को हम अगर लिखते हैं मोलर मास में, इसका मतलब है हम इसी एटॉमिक यूनिट को, इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख रहे हैं। अगर ग्राम्स में लेना है इसी सेम सब्सटेंस को तो हम लिखेंगे सेम वैल्यू एंड ओनली यूनिट इज डिफरेंट, ग्राम्स पर मोल। अगर हमें लेना है इसका फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, तो भी इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे हम लेंगे पॉलीएटॉमिक सब्सटेंसेस O2 H2O NaCl और इसका लेंगे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, तो कितना है 32, 18, 58.5। और अगर हमें इसी को मोलर मास लेना है तो सेम वैल्यू रहेगी 32, 18 एंड 58.5, बट इसका यूनिट लेंगे ग्राम्स पर मोल में। इसका डिफरेंस बस यही है कि हमें जब भी मोलर मास बोला गया है हमें समझना है जो भी सब्सटेंस दिया है वो ग्राम्स पर मोल में दिया है। मोलर से मोल याद रखो आप। एंड अगर इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में दिया है तो इसका यूनिट लेना है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज स्मॉल यू। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं आपके लिए, जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस, दैट इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, दिस बोथ आर सेम, we have to calculate then that and we will get the number of moles m। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी को नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो आप, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस, तो भी यही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इट इज फिक्स्ड ओनली, वी नॉट हैव टू कैलकुलेट, सॉरी फॉर दिस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, व्हाट इज दिस STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इट इज सेम ओनली, V इज इक्वल टू 22.4 dm क्यूब पर मोल। आपको ये वैल्यू याद ही करनी है। जब कभी हमें नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस सब्सटेंस कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमें मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट नहीं करना है, यही वैल्यू यूज करनी है, V इज इक्वल टू 22.4 इंटू 4 dm क्यूब पर मोल। और हमें वॉल्यूम ऑफ गैस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गैसियस सब्सटेंस। अगर एक कोई भी सब्सटेंस दिया है और वो गैसियस फॉर्म में है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP in the question it will be provided and this value you have to remember 22.4 dm cube। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम्स में इसकी वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको बोला था ये नंबर आप याद ही करो, जो है 1.66 इंटू 10⁻²⁴। ऑप्शन नंबर C is correct. If it is in kgs asked, then what you will write in 1.66 into 10⁻27. Question number 2. The number of molecules present in 100 ml of water is. यहाँ पे आपको 100 ml वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है ये आपको कैलकुलेट करना है। एज वी हैव लर्न नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, इट इज गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, देन 100 डिवाइडेड बाय 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, then if we divide it we get the 5.55 moles। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।
और हमें आंसर मिलेगा 33.45 इंटू 10⁻23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following elements has highest number of atoms in 1 gram each? यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया है 1 ग्राम ईच सब्सटेंस लेना है, जैसे कि गोल्ड है, सोडियम, कॉपर और आयरन है, इनका सबका वेट हमें लेना है 1 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट हमें प्रोवाइड किया है। तो एज द कैलकुलेशन एंड बाय द फॉर्मूला वी नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें पहले कैलकुलेट करना है और उस नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ईच गिवन इज 1, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड इट 1 बाय गिवन मोलिकुलर मास ऑफ द all 4 substances, 1/197, 1/23, 1/63.5, 1/56। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें किसका आएगा 1/23 का। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट और जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो सबसे कम है और वो डिवाइड में है, तो इसीलिए इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आएंगे बाय द कैलकुलेशन। तो हमें याद रखना है यहाँ पे अगर गिवन सब्सटेंस इज सेम ओनली 1 ग्राम और 2 ग्राम्स वॉट एवर गिवन इट इज सेम एंड आस्क्ड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड रहेगा ये, बस ऑब्जर्वेशन से इसको सॉल्व करना है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें आंसर आएगा सोडियम एटम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एटम्स ऑफ argon are present in 3.99 grams of it? Here atomic mass, molecular mass same only, it is provided already 39.9, and if we calculate moles of argon then we know the formula, given mass of substance by molecular mass, it is 3.99 divided by 39.9, we get 0.1 moles। इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल जाएंगे। 0.1 मोल ऑफ आर्गन is multiplied with the 6.022 into 10⁻23, then we will get 6.022 into 10⁻22 atoms of argon, and option number A is correct for this. Question number 5, which gas among the following contains maximum number of molecules at STP? Molecular masses of carbon dioxide, argon, methane and oxygen are provided, and weight of the given substance or mass of the given substance is given in the options only. 13.3 grams of argon, 11 grams of carbon dioxide, 24 grams of oxygen and 16 grams of methane। और हमें पूछा है कि इन सब सब्सटेंस में से किसमें नंबर ऑफ एटम्स आर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो हमें सेम क्वेश्चन मिला था, थर्ड क्वेश्चन में देखा था हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिया तो उसके ऑब्जर्वेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। अगर हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन आर्गन देन वी गॉट 0.33। अगर हमने मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए ऑक्सीजन के तो हमें मिले 0.75, and number of moles present in carbon dioxide are 0.25, and number of moles of methane are 1 mole we got। अगर इसको हम ऑब्जर्व करते सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, मीथेन का है। 1 मोल इज ग्रेटर देन ऑल दिस वैल्यूज। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, 1 मोल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules are present in 1 mole of methane. That's why for this question option number D is correct option. Question number 6, calculate mass of 3.01 into 10⁻24 atoms of an element having atomic mass 21.13। यहाँ पे हमें आइटम नंबर दिया गया है और उसका
मास कितना है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले जो भी नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन कैलकुलेट द mass of that atoms. Then for that we know the Avogadro's number. We will divide it with the given number of atoms. Then we will get number of moles. As it in the question given, number of atoms are 3.01 into 10 raised to 24. उसको अगर हम Avogadro's number से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। वो कितना आया हमारा कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 5 मोल्स। तो अभी हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ गिवन एटम्स। तो फॉर्मूला इसके लिए कन्वर्ट करके लेंगे, मास इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले हैं 5 एंड एटॉमिक मास इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन 21.13। तो हमें कैलकुलेट करके वैल्यू जो मिली वो है 105.65 ग्राम्स पर मोल। तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 3.01 इंटू 10⁻²⁴, इसका मास हमें कितना मिला इसका मास हमें 105.65 ग्राम्स पर मोल मिला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 7. Number of molecules present in 5.4 gram of urea is and molar mass दिया है हमें 60 grams per mole। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 5.4 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से 5.4 ग्राम्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एंड अगर इसमें हमें मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो इन गिवन सब्सटेंस, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 ग्राम्स पर मोल से। तो हमें आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 8. How many grams of H2O are present in 0.25 moles of it? यहाँ पे पूछा है हमें how many grams of H2O, वेट पूछा है वाटर का ग्राम्स में। तो 1 mole of H2O is equal to 18 grams. Then 0.25 moles of H2O is equal to 18 grams into 0.25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Question number 9 is how many atoms of argon are present in 52 moles of it? Now I will suggest you to pause here the video and calculate that, because it is very easy. Here already number of moles are given. We have to multiply that Avogadro's number with the given number of moles. Our answer will be, we will get our answer like that. 1 mole of argon present 6.022 into 10⁻23 atoms. Then 52 moles of argon, how many atoms will present? We will just multiply it with the Avogadro's number and our answer is 3.1 into 10⁻25 atoms of argon. For that our option number C is correct option. Now I will suggest you to pause here the video and calculate that, because it is very easy. Here already number of moles are given. We have to multiply that Avogadro's number with the given number of moles. Our answer will be, we will get our answer
of argon, how many atoms will present? We will just multiply it with the Avogadro's number, and our answer is 3.1 into 10 raised to 25 atoms of argon. For that, our option number C is correct option. Question number 10. How many moles of urea are present in 5.4 grams of 5.4 grams? We know the formula. Number of moles of urea is equal to mass of urea upon molar mass of a urea. Then given substance mass is 5.4 and its molecular or molar mass is 60. If we divide 5.4 by 60, we got 0.09 moles. That is option number B is the correct. How many moles of urea are present in 5.4 grams of 5.4 grams? We know the formula. Number of moles of urea is equal to mass of upon molar mass of a urea. Then given substance mass is 5.4 and its molecular or molar mass is 60. If we divide 5.4 by 60, we got 0.09 moles. That is option number B is the correct. Question number 11. What is the mass of potassium chloride produced when 12.25 grams potassium chlorate undergoes decomposition? Now here atomic masses are given of potassium, chlorine and oxygen. By using that we will first calculate the molecular mass of the potassium chlorate. How we can calculate molecular mass? We know that if we add the all atomic masses of individual element present in the compound, then we get the molecular mass. If we add the atomic mass of potassium, chlorine and oxygen, we get the 122.5. It's the molecular mass. We will use it for the calculation. Before that, we have to do the reaction. What is given? Potassium chlorate is decomposes and it gives the potassium chloride plus oxygen. Now molecular mass of potassium chloride is given. Then from that we will calculate the number of moles present. Given mass of substance is 12.25 grams divided by molecular mass. Now we have calculated that by adding these all atomic masses of potassium, chlorine and oxygen, it is 122.5 grams. Then for by calculating that we get the 0.1 moles of potassium chlorate. Then in 0.1 mole of potassium chlorate, how many? It's we have to calculate its mass in grams.
Then 0.1 into 74.5 is equal to 7.45 grams. Then our option number C is the correct option. Question number 11. What is the mass of potassium chloride produced when 12.25 grams of potassium chlorate undergoes decomposition? First, we will see the decomposition reaction. When potassium chlorate decomposes, it gives potassium chloride plus oxygen. Now we have to calculate the mass of potassium chloride which is get produced in this reaction. For that, first we have to calculate how many moles are present in the potassium chloride. That we will calculate by using the formula. Mass of given substance divided by molecular mass. How we will calculate the molecular mass? By adding the all individual atoms, that potassium, chlorine and oxygen's masses. We will get the molecular mass, that is 122.5 gram. By using that, we will calculate the number of moles present in potassium chlorate. We got 0.1 mole of potassium chlorate. It produces how many moles of potassium chloride? It produces 0.1 mole of potassium chloride. Then in 0.1 mole potassium chloride's mass we have to calculate. Then number of moles multiplied by molecular mass of potassium chloride. It is the formula for this. Then for the potassium chloride, molecular mass is 39 plus 35.5, which is the individual masses of potassium and chloride. It becomes 74.5. Then we will multiply it with the number of moles by 0.1. It gives 7.45 grams. According to that, our option number C is the correct answer.
7.45 grams. What is the mass of potassium chloride produced? Define 12.25 grams of potassium chloride. Potassium chlorate undergoes decomposition. First, we will see the decomposition reaction. When potassium chlorate decomposes, it gives potassium chloride plus oxygen. Now we have to calculate the mass of potassium chloride which is get produced in this reaction. For that, first we have to calculate how many moles are present in the potassium chloride. That we will calculate by using the formula. Mass of given substance divided by molecular mass. How we will calculate the molecular mass? By adding the all individual atoms, that potassium, chlorine and oxygen's masses. We will get the molecular mass, that is 122.5 gram. By using that, we will calculate the number of moles present in potassium chlorate. We got 0.1 mole of potassium chlorate. It produces how many moles of potassium chloride? It produces 0.1 mole of potassium chloride. Then in 0.1 mole potassium chloride's mass we have to calculate. Then number of moles multiplied by molecular mass of potassium chloride. It is the formula for this. Then for the potassium chloride, molecular mass is 39 plus 35.5, which is the individual masses of potassium and chloride. It becomes 74.5. Then we will multiply it with the number of moles by 0.1. It gives 7.45 grams. According to that, our option number C is the correct answer. 7.45 grams. Question number 14. How many molecules of water are present in a drop of volume 0.05 ml? Then volume of a drop is given 0.05 ml. Then we know the density of water. It is 1 gram per milliliter. The mass of drop of water is 0.05 grams. Then we will calculate it for the 1 mole of water. It is equal to 18 grams. As we know that 18 grams means how many molecules? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Then we will calculate it for the 0.05 grams of water. Then we get that 0.05 grams into 6.022 into 10 raised to 23 divided by 18 grams per mole. Then we get the final answer 1.67 into 10 raised to 21 molecules. That is option number B is correct answer for this. Question number 15. Which of the following species has the highest mass? इसमें हमें पूछा है 4 सब्सटेंसेस दिए हैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ और इसमें पूछा है कि किसका सबसे ज़्यादा मास है. तो हम सबको कैलकुलेट करेंगे सबका मास और एक ही यूनिट में लाएंगे जो कि है ग्राम्स में एंड देन वी विल डिसाइड विच हैज द हाईएस्ट मास. अगर हम कैलकुलेट करें 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इट गिव्स 1 ग्राम ऑफ वाटर. देन हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर. देन फॉर द 10 milliliter of water how much we will get? 10 grams. Then if we calculate for 1 mole of methane then we get the 16 grams of its mass. Then it is not asked for the 1 mole of methane, it is asked for half moles of methane. That's why we will convert it. Then we get the 8 grams of methane. Then 1 mole of carbon atom is equal to
12 grams, 12 grams of carbon. Then as we know Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen is equal, it means 1 mole of oxygen is equal to 16 grams of oxygen. But here asked for 3.011 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. Then we will get, if we divide it with the 2, then we get the 8 grams of oxygen. If we check all the answers, we got 10 grams, 8 grams, 12 grams and 8 grams. Then highest number of mass is, if we check, then it is 16 grams of it is 12 grams of carbon. Then our answer, correct option is 1 mole of carbon atom. Option number C is correct answer for this. Question number 16. Which of the following species has the lowest mass? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबका मास कैलकुलेट करेंगे इन द ग्राम्स. Then we get the answer 4 grams, 8 grams, 12 grams and 18 grams. अगर इस सब मासेस को हम चेक करेंगे तो सबसे लोवेस्ट मास हमें पूछा है जो कि है 4 ग्राम्स और वो आता है 1 मोल ऑफ मीथेन का. अगर हम ऑप्शंस चेक करें 1/4 moles of methane is equal to 4 grams. Then option number A is correct answer for this. Question number 17. How many molecules of nitrogen atoms are present in 8 grams of ammonium nitrate? As we know the formula of ammonium nitrate, NH4NO3. If we see the formula, it has the two numbers of nitrogens. First we will calculate number of moles present in the 8 grams of ammonium nitrate. Then we know the formula, number of moles is equal to mass upon molar mass of the substance. Molar mass of substance given 80 grams, given mass of substance given 8 grams. If we calculate number of moles, we got 0.1 mole. In number of moles of ammonium nitrate, we got 0.1 mole. Now it is asked number of moles of nitrogen atoms. As we see the formula, we got the two atoms of nitrogen are present in ammonium nitrate. Accordingly, if we calculate number of moles of ammonium nitrate into number of atoms of nitrogen, that is Nu, then we get the number of moles of nitrogen atoms is equal to 0.1 mole into 2. That is number of molecules of nitrogen atoms is equal to 0.2 moles. That is, if we go check the options, then option number B is correct option for this. Question number 18. Which from the following substances consist of total 1 mole atoms in it? यहाँ पे पूछा है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट है कि 4.24 ग्राम्स ऑफ अमोनिया और 1.8 grams of water और 2.8 grams of नाइट्रोजन और 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड में. तो चेक करेंगे इसको. As we know the formula for calculating number of moles present in the substance, it is given mass of substance by molecular mass. अगर हम चेक करेंगे number of moles present in ammonia, that are 0.25 moles, and number of atoms present in that, if we calculate how many atoms, 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms, 4 atoms are present in ammonia. If we multiply that atoms with the moles, then we get the 1 mole of atoms present in ammonia. That only asked in which substance of the given from the given options contains the 1 mole of atom. That is option number A is correct. Then there is no need to check other options as we get the answer. Question number 19. What is the number of moles of carbon and hydrogen atoms respectively in 46 grams of methoxymethane? If we draw the structure of methoxymethane, we get CH3OCH3. Its molecular formula is C2H6O. Its molar mass is 46 grams per mole, that is provided. Then if we calculate the number of moles in methoxymethane, what we will get?
Given mass of substance is 46 grams and its molecular mass is also 46 per mole, which is same, only 46 grams like this. Both numbers are same. Then if we divide it, then we get the 1 mole of methoxymethane. Then 1 mole of methoxymethane contains 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. Then 1 mole of methoxymethane contains 2 moles of carbon atoms and 6 moles of hydrogen atoms. Then for this, if we check the option, which one is the correct for this? Option number A is correct answer. Question number 20. What is the number of molecules present in 0.1 kg of NaOH? Molecular mass of NaOH also provided 40 grams per mole. As we know that mass of NaOH is given 0.1 kg. First we will convert it into the grams. Then we know the formula for number of moles is equal to mass of substance in grams divided by molar mass of a substance, that is 100 by 40. The number of moles, how much we got? 2.5. As we multiplied it with the Avogadro's number, we will get the number of molecules present in 2.5 moles. That is, our answer is 1.5055 into 10 raised to 24. That is, option number B is correct answer for this. Question number 21. What is the total number of moles of atoms present in 3.2 grams of methane? Then as we know, molecular mass of methane is 16 grams per mole. Then number of moles, we know the formula, given mass of substance by molecular mass of the substance. Then moles of methane is equal to 3.2 divided by 16, that is 0.2 moles. Then atoms in a molecule of methane is equal to 5. How we got that? Atoms in the molecule of methane are 5. Carbon, 1 carbon and 4 hydrogen, that is number of atoms is equal to 5. Then moles of atoms in 3.2 grams of methane is equal to 0.2 into 5, that is equal to 1 mole of methane. Then option number D is correct answer for this. Question number 22. Which among the following elements contains the highest number of atom in 1 gram? We have calculated this like this question already. 1 gram of all substances are given. Then if given mass of substance is same for all the elements, then what we have to do? We know the formula. Number of atoms are inversely proportional with the molecular mass of the substance or atomic mass of the substance. If we see the atomic masses of all elements, then we get the 23 is smallest number of atomic mass, then it only have the number of largest number or higher number of the atoms. Then sodium is correct answer for this. Question number 23. What amount of calcium oxide will be produced by decomposition of 10 grams calcium carbonate? Atomic mass of calcium is given 40, carbon 12 and oxygen is 16. As we write the reaction calcium carbonate, it gives calcium oxide plus carbon dioxide. Then 100 grams of calcium carbonate evolves 56 grams of calcium oxide. Then 10 grams of calcium carbonate will evolve how much? Calcium oxide. Then we will calculate for that. 10 into 56 divided by 100, we get 5.6 grams of calcium oxide. That is option number B is correct answer for this. Question number 24. What quantity of oxygen is consumed when 7.8 grams of benzene is burned completely in the air? As we know that 78 grams of benzene requires 240 grams of oxygen at standard temperature pressure for the complete combustion. Then in the question it is asked 7.8 grams of benzene required how much oxygen? Then we will calculate for that. 240 divided by 78 into 7.8, then we get the 24 grams of oxygen is required for the 78 grams benzene to burn completely. Then option number C is correct answer for this.
Question number 26. Calculate the mass of 250 molecules of NaCl. Molecular mass of sodium and chlorine are provided. Then as we know that 1 mole is equal to 1 mole of NaCl means 58.5 grams of NaCl. Then mass of 250 molecules asked. Then how to calculate given mass of substance by molecular mass, and by converting the formula we get that 250 into 58.5 divided by Avogadro's number. Then we get the value 2.428 into 10 raised to minus 23 kg. That is option number A is correct answer for this. Question number 27. What is the mass in kg of 5 moles of acetic acid and given molecular mass is 60 grams per mole. यहाँ पे हमें पूछा है 5 moles of acetic acid का mass in kg. Then we know the formula, number of moles is equal to given mass of substance divided by molecular mass. हमें यहाँ पे molecular mass पूछा है तो formula convert करके लेंगे. Mass in kg is equal to given mass of substance by 1000. Then we will get the 5 moles into 60 grams per mole divided by 1000. Why we are dividing it by 1000? Because mass in kg it is asked, and that given molar mass is given in the grams. That's why we are dividing it with the 1000. Then we get 0.33 kgs. Option number B is correct answer for this. Question number 28. Calculate number of moles present in 9.10 into 10 raised to minus 2 kg of water. We know that molecular mass of water is equal to 18 into 10 raised to minus 3 kg per mole. Then moles of water if we calculate, then what we get in 9.10 into 10 raised to minus 2 divided by 18 into 10 raised to minus 3. Then number of moles we got 5.05. It is approximately 5. Then our option number D is correct answer for this. Question number 29. What is the volume occupied by 1 molecule of water if its density is 1 gram per centimeter cube? तो हमें यहाँ पे पूछा है what is the volume occupied by 1 molecule of water. As we know 1 mole of water is equal to 18 grams. Then 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. It contains 18 grams. This value is same as the 18 grams. Then mass of 1 molecule of water, if we want to calculate, then what we have to do? 18 grams into 1 divided by Avogadro's number. Then we will get the mass of 1 molecule of water, that is 2.98 into 10 raised to minus 23 grams. As we know the formula for density is equal to mass upon volume. Then we can calculate volume occupied by 1 molecule of water. Then we will get that mass by density is equal to 2.98 into 10 raised to minus 23 grams upon 1 gram. Then we get the 2.98 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. It is the option number B is correct for this. Question number 30. How many molecules of carbon dioxide are formed when 0.6 carbon is burned in the air? Very interesting question this is. यहाँ पे पूछा है हमें कार्बन को 0.6 grams of कार्बन को burn करने से हमें how many molecules of carbon dioxide we will get. तो पहले reaction को लिखेंगे. 12 grams of carbon plus 32 grams of oxygen, it gives 44 grams of carbon dioxide. Then we will calculate it. 12 grams of carbon will give 44 grams of carbon dioxide. But हमें पूछा है 0.6 grams में कितने carbons will be present. Molecules of carbon dioxide will be present. Then we will calculate it. 44 into 0.6 by 12. We get 2.2 grams of carbon dioxide. Then number of molecules asked. Then as we know that
we have to multiply it with the Avogadro's number. 2.2 into 6.023 into 10 raised to 23 divided by 44. Then our answer is 3.01 into 10 raised to 22. If we check the option number A is correct for this. Question number 31. Find the number of moles of sodium atoms in 6.9 into 10 raised to minus 2 kg and atomic mass is provided 23 grams per mole. Now we know the formula for number of moles. I hope you have learned that it is mass of substance divided by molar mass of substance. Then given mass of substance is that 6.9 into 10 raised to minus 2. It is given in kg, then we will convert it into grams. That's why here we will multiply it with the 1000 and its molecular mass is 23 grams. Then it is divided by 23 grams per mole. Then we get the number of moles as 3. 3 moles of substance present in the 6.9 into 10 raised to minus 2 kgs of the sodium atom. Then option number C is correct for this. Question number 32. Calculate mass in kg of 2.5 moles of ammonia. Then we will calculate molecular mass or molar mass of the ammonia. We got 17 grams. How we got? Ammonia molecular formula is NH3, N is 14 plus 3 hydrogen 17. Then we will calculate 2.5 moles contain how many kgs of mass of ammonia. Then what we have to do, simple, we will multiply it 7 grams into 2.5 moles. Then we will get the answer 4.25 into 10 raised to minus 2 kg. That is our option number B is correct for this. Question number 33. How many moles of carbon atoms are present in 3.6 kg of carbon? यहाँ पे हमें पूछा है moles of carbon atom. How many moles of carbon atoms are present in 3.6 kg of carbon? पहले हम kg of carbon को grams में convert करेंगे. 3.6 kg of carbon is equal to 3600 grams of carbon. As we know 12 grams of carbon means 1 mole. यहाँ पे Avogadro number नहीं लेना है, molecules के बारे में नहीं पूछा है, moles में पूछा है. So as we know 12 grams of carbon is equal to 1 mole of carbon atom. Accordingly, if we do the calculation, then what we have to do, number of mass of given substance into 1 mole divided by molecular mass of carbon. Then if we put the values, then we will get 3600 into 1 divided by 12 and our final answer 3.0 into 10 raised to 2 moles of carbon atoms are present in 3.6 kg of carbon. Accordingly, option number A is correct answer for this.